Okay, so today's topic is random variables and probability distribution. Let's first understand what is a random variable. To understand what is a random variable, let's consider an experiment. Let's consider our old experiment of rolling a die. What will be the outcomes of rolling a die? So 6 outcomes. 6 outcomes. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, if I add one more die to it, instead of one die, let's do rolling 2 dice. So this will become your first die. And what is the outcomes of the second die? Same 6 outcomes, right? Now, in this simple experiment, if I define the variable x to be sum of the numbers appearing, right? Sum of the numbers appearing is the variable x. So what values can x take in this particular experiment? That is the question that we should be able to answer because we know the experiment very well. What are the values x can take in this particular experiment? The experiment is we have rolled 2 dice together. What could be the sum? What could be the minimum sum? Let's see what could be the minimum sum and what could be the maximum sum. What could be the minimum sum, Sohani? मतलब सर क्या आंसर आना चाहिए सम का? मैं समझी नहीं क्वेश्चन आपका. सम दोनों डाइस का के नंबर्स का सम क्या हो सकता है मिनिमम इफ वी रोल देम टुगेदर? 1 और 1. 1 और 1. तो सम क्या हो सकता है? फोकस ऑन द सम, नॉट ऑन द इंडिविजुअल 2 आउटकम्स. 2 2 2 2. 2 2. एंड सम को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. And why we are calling it a variable? Because it can take multiple values. It is not a constant, isn't it? So 2, what else can come? What is the maximum sum that can come? 12. 12. When 6 and 6 comes. Good. Maximum sum is 12. And I believe every sum in between 2 and 12 should be possible. हाँ. है ना? 5 भी आ सकता होगा, 6 भी आ सकता है अगर 3 और 3 आ जाए, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 can also come, 10 can also come, 11 can also come, and 12 can also come. Nothing more than 12 can come, and nothing less than 2 can come. So from such an example, I think now the definition or the meaning of a random variable should be clear. So we can write now the definition. A variable
whose values are a function of the outcomes of a random experiment. Isn't it? There was a random experiment. Why it is random? Because the outcomes are random. Anything can happen, right? So there was a random experiment of rolling 2 dice, and we associated a variable for this experiment, the sum of the numbers appearing. This is the name of the variable. And we see that the values of this variable depend upon what outcomes can come. That is why we are saying that this variable is a function of the outcomes of this experiment. So this is clear. Now, what are the probabilities of these values happening? That is the next thing that we need to find. Now, probabilities of events x is equals to sum x, that we need to find, right? So what will be the probability of when random variable takes the fixed value 2? In other words, what are we trying to find? Probability that sum is 2. What will be the probability that the sum is 2? Now, to finding out each probability becomes one by 12. 1 by 12. Why? 1 by 12. Why? आपने बोला sum is 2 तो You should. sum is 2 तो एक ही तो बार होएगा. एक ही बार होएगा, but what are the total number of outcomes? Oh, sorry. 2 on 10. No. Sum is 2. Okay, so let me repeat. So finding out the probability that the sum is 2 when we roll a dice is a probability question, which we have done in the previous. 1 by 11, sir. Sorry. No, 1 by not 1 by 11. 11. No, that is totally wrong. Don't फिर क्या count. होगा? Okay, forget this. If the question is what is the probability that we get a sum 2 when we throw 2 dice, won't we list all the outcomes first? How many outcomes are there when we roll 2 dice? 36 outcomes. Right? These 36 points that I am drawing here, this you already know. Yes sir. तो इसमें से ऐसे आउटकम्स को इकट्ठा कर लो जिनमें सम 2 आता है, और वो कब आएगा 2? जब ओनली 1 और 1 आ जाए. फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? What are our favorable So 2 by outcomes? 36 हुआ. 1 by 36, because there is only one outcome, 1, 1, which can make the sum 2. हाँ, sorry. 1 by 36. 1 by 36. Now there are 11 such questions that we need to do. What is the probability that the sum can be 3? In how many ways can sum be 3? 2, 1 or 1, 2? 1, 2. So what will be the probability of getting 3? 2 by 36.
What is the probability of getting sum 4? In how many ways can you get 4? 1 3, 2 2, 3 1. हाँ मतलब हर बार एक एक बढ़ रहा है. Looks like. Let's see what happens. X is equals to 5. पहले डाइस में 1 तो दूसरे डाइस में 4 आ जाए. पहले डाइस में 2 और दूसरे डाइस में 4 1 2 3 3 2 4 1. वेरी गुड. 3 2 4 सर 1. एक एक बार एक एक नंबर बढ़ रहा है ना. बट 4 by रिड्यूस भी होगा 36 अगला 5 by कुछ टाइम के 36. बाद. This pattern will only continue at a till a certain point. Let's see. 6 का 1 5 3 3. नहीं 1 5. गो इन सीक्वेंस. 1 5 नहीं किया तो 1 को बढ़ाओ और 4 को कम करो, 5 को कम करो. 2 2 4 4 3 2. 3 नो 3 3 3 3. 3 3. सर 6 है ना. हाँ. हाँ 4 2 4 2 5 1. 5 1. Let's go ahead. X is equal to 6 तक हमने कर लिया. What about 7? Yes, 7 का बताओ. Think over it. 1 1 6 by 36, 2 by 36, 3 by 36, 4 by 36, 6 का 5 by 36, 7 का कितना आ रहा है? 1 6 2 5 2 5 3 4 3 4 4 3 4 3 5 2 6 5 1. 2 6 1. 1 2 3 4 5 6 outcomes. 6 by 36. What about 8? Will it be 7 by 36? नहीं अब तो नहीं होगा ना क्योंकि 6 प्लस या शायद हो सकता है. 2 पता 6. नहीं. एक एक अब कम होता रहेगा क्योंकि 6 के बाद तो है नहीं नंबर तो 2 से स्टार्ट होगा Yes, अब. very good. तो जैसे Very nice. 5 by 36 3 2 Let's 1. check. 2 3 4 5 5 3 6 2. 1 2 3 4 5 आ रहे हैं. So now you got the pattern. 5 by 36, 4 by 36, 3 by 36, and 2 by 36, and 1 by 36. Right? So when we have listed the probabilities of this random variable, we got 11 probability values, right? And this particular table, as a result of what we have done so far, ये जो table बन गई, इस table को हम कह देते हैं probability distribution. Why are we calling it probability distribution? Because we are listing down the probabilities corresponding to each value of the random variable, right? In such सर इसको अगर उससे करना हो कॉम्बिनेशन से तो कैसे करेंगे? किसको, किस चीज को? यही क्वेश्चन को. क्वेश्चन तो मतलब हर एक क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया है. अच्छा आपने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं दिया ना. ठीक है. हाँ. So why it is called distribution? Let me come back to that. इसमें ऐसे लिखेंगे ना when x is 2 3 4 पे सबका. For each value of x, we can have a corresponding probability value.
right? And we can plot it. 2 पे 1/36 होगी, फिर 2/36, 3/36, ऐसे बढ़ती जा रही है प्रोबेबिलिटी। तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिल सकता है हमें। पहले बढ़ रही है, फिर 12 पे आके फिर से 1/36 हो गई है। इफ वी जॉइन ऑल ऑफ दिस, we get a probability distribution corresponding to the variable x. So x-axis पे we are plotting x, and on the y-axis we are plotting probability of x. Clear? Any doubts? नहीं सर। Good. So we have understood this on the basis of one example. Let's take another example and find out another random variable. Let's change our experiment this time. Let's consider another random experiment, which is throwing or tossing 3 coins. अब हमने 3 coins को टॉस किया है, ठीक है? And I'm defining a new variable x as number of heads appearing. ठीक है, समझ में आया नंबर क्या है, रैंडम वेरिएबल क्या है? 3 कॉइन टॉस किए हैं। हाँ, हर हमें प्रोबेबिलिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है कि 3 कॉइन में कितनी बार हेड आएगा। वेरी गुड, कितनी बार हेड आ सकता है? लेट्स सी व्हाट वैल्यूज इट कैन टेक। यस, मिनिमम कितनी बार हेड आ सकता है और मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है, तीनों बार आ सकता है। तीनों बार आ सकता है, और या तो सॉरी, तीनों बार आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता। कभी भी नहीं आ सकता। मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 3, एंड ऑब्वियसली एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है। सो x कैन टेक these 4 values, and what will be the corresponding probabilities of x? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? when x is equals to 0. सेकेंड प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे when x is equals to 1. थर्ड probability is when x can take the value 2, and fourth probability is when x takes the value 3. Indirectly it means ki what is the probability of getting no head? This one means probability of getting no head. What will be the probability? We have done such questions before of getting no heads, matlab all tails, right? How many outcomes will be there which will show all tails? Just one out of? वन Shall I आउट list? ऑफ How many outcomes will be there total in this experiment? 3 कॉइन है और एक सेकेंड, 3 कॉइन्स में कितने 6। आउटकम्स? 3 कॉइन्स में कितने आउटकम्स होते हैं? 2 into 2 into 2, 8 आउटकम्स होते हैं टोटल, राइट? इफ यू कैन मेक अ अच्छा, ट्री, राइट है ना, राइट। पहले थ्रो में पहले कॉइन में टेल है या हेड आ सकता है। पहले कॉइन में टेल आया तो दूसरे कॉइन में टेल या हेड आ सकता है। इस केस में भी दूसरे कॉइन में टेल या हेड आ सकता है। और थर्ड कॉइन में भी टेल या हेड आ सकता है। फिर इसमें भी टेल या हेड आ सकता है। एंड देन वी प्रोसीड लाइक दिस, वी मेक अ ट्री इन सच क्वेश्चंस। 2 कॉइन होते तो हम ग्रिड भी बना सकते थे, जैसे डाइस वाले में करी थी। So we can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 outcomes are there. Let's list them also. TTT, TTH, THT, THH, HTT, HTH, HHT, and HHH. Now we have listed the outcome and the job becomes very easy. How many outcomes? No head is coming. Just one. So 1 out of 8. In how many outcomes? One head is coming.
एक बार जब हेड आए, 3/8, 3/8। 3/8, वेरी गुड, 3/8. हाँ, क्योंकि एक बार जैसे हेड टेल 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 हेड टेल टेल And टेल head, हेड। tail head. In how many outcomes two heads are coming? 3 3 3। 3 again. ये भी 3/8। Yes. ये And how वन बाई many? एट 1/8. 1/8 1 by 1 by 8। 8. Yes. So this table is the probability distribution, right, of this particular random variable number of heads. I hope this is clear, and I think you knew some of this already. Good.